Hi Samresh. Hi. दिख रहे मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Okay. So I think yesterday what we did the authorization code grant type, right? So I think उसमें कुछ problem नहीं है, right? मतलब we are able to understand. Okay. So we so Anjali, actually I'll share you the yesterday's video. So what we did yesterday, I think first day you saw that we covered the password grant type, right? How to use password grant type. Yesterday we covered that authorization code grant type. Okay. So I'll share you the video. If you have any question later, we can connect. Okay. Now today we will start with some other thing. First, let's start with the client credential. Okay. Without wasting the time, let's see what is the client credential. So basically, client credential is used when you have a batch application. Suppose you want to do something, your application want to do some changes, right, and you want to authorize that, but there is no user interaction is needed, right, because in a online batch or in a nightly batch there will be no user, right. How you can authorize that type of client? So let me take a look what we can do. Okay. So here what we are going to search, sorry, and with client what we will do with write f3 secret sec3 dot authorization grant type should be client credential dot, I need to give scope, again scope, with client. Okay. So here this is the thing. So let me few things. I think Anjali, you need to take a look. You can I'll just paste it to the notepad. Just and a few more things. Can you do the thing? So in the web security config, if you can, okay, this link might not. So you can use this is a notepad link, and if you can see this first, this bin, this should be there in the web security config file, and this should be there in the auth server config file AutoWeb. And one more thing, endpoint, if you can see endpoint.authentication manager, we need to use the user details service also, right. So the three line of code you need to change first. Then now what I did in that right authorize and client section, you can type this code. Okay. ठीक है. Okay, just type it, let me know when
You are done. Okay, ठीक है. बाकी सबने लिख लिया right? ये this line you guys have added. Okay. Just a small thing. I think this is credentials. Yes, not credential because it will not work. Okay. ठीक है. अभी इसको मैं रीरन करता हूँ and let's see what the token is right getting or not. I'm able to get the token or not. Okay, it's running. Now let's go here. Yes. If you can say this is my right work token. This is the link, right? Here, if you can see, uh, I need to use the this was I was using during the password type. We'll use the same payload, only app3sec3, and from body we'll just remove the username password because we don't have the username password, and we'll type here grand type is equal to client credential. ठीक है. I'm able to get it. Yes. If you guys notice, there is no refresh token here, right? Because in this client credential, there is no meaning of refresh token. Is there any meaning? Because you don't have any user, right? You have the you are working as a client only, so there is no refresh token, right? ठीक है. Next time he has the its own username password because I'm an application and I know that who am I, right? I'm the client. I have the all the client credential, the app3sec3, right? Username is not eventually required, तो मेरे को refresh token चाहिए भी नहीं कोई. ठीक है. Samres, okay, fine. Now let's see what is the check token I can work on not. Yes. Here, if you can see, we are not getting any user details. Only we are getting scope, active, expiry time, and client ID. Okay, there is no user details is required. Okay.
Okay, whenever you are done, just let me know. We will go ahead next level. Yes. In this web security config, we need to. These are the two config method, right? One is with HTTP security. One is authentication manager builder. In this authentication management builder, I have set up the client. Sorry, user auth in memory authentication with user Atul password 12345 author is read, right? And here I need to use to HTTP CSRF disable, because CSRF will not allow you the post, right, method to come in. And for the other one, which one, the authorization code, I need the form login, so I need to use the HTTP form login. And this is my default password encoder, right? This is the bin. And there are two more bin which will be used by the auth server config. One is authentication manager, another is user detail service. ठीक है? Sure. Token. First one is token. Auth token. Authorization, I need to use type is basic auth app3 sec3. Header अभी के लिए कुछ नहीं देना है. Everything will be default header. And in body grant type client credential S use करना और scope web client. Snehal, able to get the result? अंजलि चल रहा है क्या कि नहीं सू? ओके.
Okay, check token there. Summaries, can we go ahead? Hmm. Authorization में resource and secret. This is the resource server, right? We have set up here. हेडर में कुछ नहीं है, बॉडी में सिर्फ टोकन दे देते हैं, टोकन. ठीक है. हम्म. देखता हूँ. देखो. हम्म. अरे चेक अंडरस्कोर टोकन, ओथ चेक अंडरस्कोर टोकन, पहले ओथ दो. नाउ ट्राई गेटिंग राइट. यस. ठीक. चल. या. ओके. Can we go ahead? Anjali, if you need more time, let me know. We'll. Okay. Now I'm going to implement the last, authorization grant type. What is that? What is that? किसी को याद नहीं है? Implicit grant type. Okay. Right. So first of all, we understood password grant type. Then we understood refresh token grant type. What do you mean by refresh token? Then authorization code, right? Then the last one is the client credential. Client credential is easy, right? You need any explanation this thing, but because there is no user, only client will go to auth server, the credential are correct, then the resource server will give the all the information. Okay, there is no nothing else, right? We need here. Okay. Now, what is the implicit grant type? Implicit grant type, when I was preparing this,
PPT, I thought that implicit grant type will be too easy, so everyone can implement it after getting all the things. So this is not in my PPT, but okay, let's see. We will do the things, but you guys will guide me what to do and how to do. I think you would have a clear idea how to do the implicit grant type. uh, Before going that, I'll just reiterate authorization code grant type once so that Anjali will get a fair idea and everyone can recap what we understood authorization grant type. Okay, authorization code grant type. Then it will be related to explain the implicit grant type. Okay. So in the authorization grant type, what I was saying, okay, in the password grant type, what we did, we as a client user gave us the password. Okay, this here, take this username password, right? Use in your application and get the token, right? And then the same token can be used in resource server. So resource server will call this check token API to get that the token is valid or not. In authorization code grant type, we saw that when your situation is like you are not hosting the auth server, someone else is hosting the auth server. Okay, then you need to use the authorization grant type flow. What does it flow say? Whenever user want to access some application, assume that application is a client, right? Client will redirect to that auth server, login screen. It's like whenever you are going in a application and application is showing that sign up with Google, right? So what it is doing, if you click on that sign up with Google, you will redirect that user to sign in with Google. Sorry, you already have a Google account, right? Redirect the application redirect the page to the Google username password where you need to provide the username password. After giving providing the username password, Google asks you, okay, this application want to access, are you authorized, are you authorizing, are you giving me the approval, okay, that I should go ahead. When you press yes, right, authorize, then what it does, it redirect to the client page with a code. Okay, now that code is will be actually accessible from client end. Client end means the third party application. Then using that code, right, instead of that username password, instead that code, the user the client can you know get the authentication to authorization token, right? So using that code, it will reach to the auth server that give me the token. This is my code you have given me, and after getting the authorization token, that token can be used for further communication. That token can be used by to get the resource from resource server. Okay, so this is the authorization code flow, right? Everyone is clear? Okay, clear है? ठीक है, एक बार करके दिखा देता हूँ. So Anjali, you can take a look what so in the code everything is there. So code में if you can see, this is the thing, authorization code, you can see the extra thing configuration we gave, that is the redirect URI, because this URI is needed. Okay, you need to configure here so that whenever this auth server, right, successfully able to authenticate the user, it should redirect that redirect to your original application. Okay, so what we are doing, let me take a look. As of now we don't have any client, but definitely we will build one client soon. So we are trying to access via URL only. So what I'm trying to do, here is like, this is my URL, right? So whenever client wants to redirect, it needs to actually it needs to use this URL. Okay,
so sorry, this URL is having all the information. What is the information? OAuth authorized and response type should be code, client ID and scope. Okay, if I click this, it will redirect to the login page of the auth server, right? I need to give the Ratul, then 1 2 3 4 5. Okay, then if I do the sign in, it will ask me, do you authorize app2 to access your protected resource? If I approve it, right, if I authorize it, it will give me a code. This is my code. Okay, and using that code, right, I need to call the I need to call the other one. What I need to call? I need to call the token. Where is the token? Yes, this is the token. If you can see, so in this authorization, we need to use again the app2 sec2, and in the body, instead of the user details, I need to use the code and redirect URI. Okay, whatever I registered inside the auth server. So if I give it, it will give me one. It is giving me, oh sorry, code हमने copy नहीं किया, sorry. So if I call this, it is giving me a new token, right? Using this token, I can use for my next thing. So this was my authorization code flow. एक छोटा सा चीज missing है इधर. Can anyone tell me what is missing here? Authorization code के साथ refresh token चलता है, right? Implicit में चाहिए नहीं, but authorization code में तो चलना चाहिए, right? Yes or no? Sorry, implicit में नहीं, client credential में नहीं चाहिए. Implicit अभी तक discuss नहीं किया. But authorization code is a valid scenario, right? Yes or no? Let's see. Okay. Okay. Let me repeat the flow. One more thing, I'll just explain you. This code is a one-time, one-time pass. You can use this code only once, right? You can't use this code on the next, next token access or anything. Okay. Just even if you're using the code, you hit the URL and you are not getting the correct response instead of some other issue, next time you can't use the code. You need to issue a new code. That is the security mechanism. Okay. I need to. Okay. Sorry.
refresh token added. Yes. So what I did, I just mentioned in the authorization grant type that authorization code along with the refresh token, right? That means the app to set to authorization code and refresh token both are allowed now. Okay. इधर तक हो गया, जब हो जाएगा बोलना. Hmm. Exactly. Hmm. Exactly. Exactly. Auth server will redirect. So if you can see that code कहाँ पे दे रहा है, अगर कोड का यूआरएल देखो एक बार पता चलेगा. ऑथ सर्वर किस में 3004 में है. सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद उसने रिडायरेक्ट किया 3005/home क्वेश्चन मार्क कोड. दैट मीन्स दिस इज योर, देखो 3005 होम. सो रिडायरेक्ट यूआरएल में वो कोड देता है. ओके. नो नो नो, देखो ऑथ सर्वर में जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा, सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट फ्लो देखो, आपने सेम चीज वो जो गूगल वाला सिनेरियो सोचो. यू आर ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट रिडायरेक्ट करेगा किसको, ऑथ सर्वर को. ठीक है. ऑथ सर्वर में तुम जाते हो, वहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हो. वो यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुल होने के बाद, ऑथराइज होने के बाद, इट विल रिडायरेक्ट टू द क्लाइंट. सो दिस इज माई क्लाइंट या दिस इज माई क्लाइंट. ठीक है. और क्लाइंट के जब रिडायरेक्ट करेगा तब उसके साथ वो कोड ऐड कर दे. दिस इज द कोड. फिर क्लाइंट का ड्यूटी है कि वो कोड यूज़ करके वो फिर से ऑथ सर्वर को कॉल करे, विच वी आर डूइंग यूजिंग पोस्टमैन, टू गेट द टोकन. इसका एंड टू एंड करेंगे, इसका एंड टू एंड करेंगे. अभी जो ब्राउज़र में आधा कर रहे हैं, आधा पोस्टमैन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे. एक्चुअली इसको एंड टू एंड करेंगे, जहाँ से आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा कि हाउ इट इज. बट हाई लेवल पे दिस इज द फ्लो, कि यू गेट द कोड, देन यूजिंग दैट कोड यू विल गेट द ऑथराइजेशन टोकन. ओके. दिस इज द ऑथराइजेशन कोड फ्लो. अभी लास्ट थिंग जो हम करने वाले हैं, दैट इज द इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप. ओके. सो फॉर इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप देखता हूँ कैसे करते हैं. लेट्स सी. Sorry. And मैं ये देख रहा हूँ कि इसका कुछ इनम टिनम है नहीं क्या. अभी तक तो सिर्फ मैंने स्ट्रिंग यूज़ की. इम्प्लिसिट के लिए इम्प्लिसिट ग्रांट यूज़ करता हूँ. देखते हैं, कोई नहीं. इम्प्लिसिट. ठीक है. देन व्हाट आई नीड टू गिव स्कोप, वेब क्लाइंट,
and I need to use the redirective array. ठीक है, redirective array क्या यूज़ करूँ मैं? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, इसको सिर्फ ये इसको चेंज कर देते हैं, 3005 को 6 कर देते हैं तो सेम ना लगे। डॉट यहाँ पे एक्सेस टोकन वैलिडिटी सेकेंड इज 300, ठीक है। So this is the new code we have written. Okay. Let me know whenever done. Okay. Let me know whenever you are able to, complete the coding. Then you need to read on this application. Done. Sorry. Okay. Everyone done, right? Okay. So the next thing what we are going to do, stop return हो गया। अब इस सिंपल चीज़ आपको जो चेंज करना है, जो हमको implicit grant टाइम मैंने क्या बोला था, instead of asking for code, if you believe your client and if it is your you are not sorry okay, just give me 1 minute. Okay, so instead of getting the code, you can directly ask for the token, right, to your auth server. Okay,
but that is not somehow recommended, but ठीक है मतलब it's your in-house thing, so you can use this. Okay, but ideally again that is not recommended, and you can understand why it is not recommended. It's too. So what in the request parameter, what you need to change, this is the thing, right? You need to change the response type as token. Instead of code, you need to change the response type as token. Rest all other things will be same. Let me do the request, then let's see what is happening. It is redirecting you the sign in page where I'll give the Ratul and 1 2 3 4 5. Then if I go the sign in, it is saying that do you authorize app4 to access your protected resource. If I app authorize, it is giving me a error. What error it is giving me, let's see. Oh sorry, मैं डिनाई कर दिया एक्सेस को. सॉरी सॉरी. लेट मी ट्राई अगेन. मेरे को ऑथराइज करना है, राइट? Okay, let me first give you that link so everyone can work with me. अच्छा, you were able to access this notepad, right? Yes or no? ठीक है, अभी जाते हैं. दैट इज रातुल 1 2 3 4 5 sign in. I need to approve it. If I just authorize, it will deny it, right? If I authorize it, if you can see in the URL, it is giving me the access token, and it is saying this token type is bearer, expire is 299. So I set the 300. It is saying that. एक यहाँ पे एक चीज compromise हुआ. Can anyone make me understand what is not the correct thing? Client secret is not mandatory here. हमने कहीं पे क्लाइंट सीक्रेट दिया ही नहीं. दिया कहीं पे? ऐप फोर का जो सेक फोर क्लाइंट सीक्रेट है वो कहीं पे यूज किया हमने? कहीं पे यूज नहीं किया. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ यू ओनली इनेबल कि आपका इन हाउस प्रोडक्ट है, बाहर का कोई आपको नहीं आ सकता है. बाहर का कोई आपको मतलब no one can, and it is your own client, right? Your credential is not needed, only you need what? The username password of the user. In that case, implicit grant type is, you can use it, but there is a problem that none, you will get the direct authentication token. There is no intermediate step, right? And you are getting the authorization token without using any secret. You are just giving the client ID. ठीक है? Summarize. Now it is clear why authorization code is needed. हम सीधा implicit grant type को भी कर सकते हैं. Clear? यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड नहीं लग रहा है. Client can direct get the access token. Here the problem is, that's what I'm saying you have a system in company in house. No one is outside of the organization. No one can access it, and you know that what are the application you are going to install, so you can trust the application. That means trust the client, right? And what that client will do, client will redirect to you, and it will get access token. Using that access token, it can do whatever it want to do. ठीक है, अभी इसी एक्सेस टोकन को यूज करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं. राइट, आई विल यूज द bearer token.
Let me take a look. It is giving me all the details of that along with the client details, along with the user details, everything. ठीक है? हो गया? Let me know whenever you are done. Okay? बोलो जब हो जाएगा just let me know. Able to understand what we did, what are the all other things? Clear है right? पूरा? चलो great. Now अभी हमने 5 grand type, not 5 but हाँ मतलब you can think of a 5 grand type what is available in the market in the whole organization. First is password, authorization code, refresh token, implicit grant type, client credential grant type. Okay, 5 we have implemented. So using this, assume that using this, two configuration classes, right? You are able to host a auth server, ठीक है, with the OAuth 2.0 protocol. Only the problem is, or you can think of, there two things needs to be modified. Here we are using in-memory authentication. You can use your data, you can configure the data source. Everyone know right how to do the things, right? You need to implement user detail service which will fetch the data from a database and return the data instead of writing here in the in-memory. Rest all other thing can be done easily with this line of code. Okay, ये कहते हुए रिसोर्स सर्वर मतलब वी विल गो टू द रिसोर्स सर्वर, राइट? ऑथ सर्वर हो गया, वो वो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ऑथ सर्वर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज बीइंग डन इम्प्लीमेंटेड. ओके, दैट इज आवर रेडी. ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एनीथिंग विथ ए लिटिल कॉन्फ़िगरेशन चेंज. अभी रिसोर्स सर्वर में फोकस करते हैं. क्लियर है राइट? नो मोर क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है ऑथ सर्वर में? स्नेहल, अंजलि, रातुल, समरेश, बोलो. Good. Okay. Let's go to the auth server. What is the auth server? Sorry, let's go to the resource server. What is the resource server? Can anyone tell me what is the resource server? I explained earlier in this picture. We need to understand the resource server very, in a very good way, because auth server is completely separate. But what is a resource server? What do you mean by resource server? Is it another server? And what is its responsibility? Okay. How in this diagram I'm just explaining that resource server should protect the resource. How it will protect the resource? One question. First question is how it will protect the resource, right? Second question is will it be another server, and how many server we need to host here? एक तो auth server हो गया. अभी मेरे को
I want to go to the application. Yeah, मतलब I have a application to be done, right? So yeah, ठीक है. What I'll do, my usual flow, if I think of a password grant type, what I'll do, I'll have a user ID and a user login page. From that user login page, I'll call you the auth server. You will give me the token. Now I want to actually use a endpoint. Assume that endpoint name is a customer endpoint, customer get data or customer get account. Okay, so customer. So I want to use some services hosting a post a get endpoint which is uh, which is hosting in, assume that some my base URL, after that slash customer slash account, right? And I want to get the account. Now how the resource server will interject? What is the responsibility of resource server? Right? That is a valid question. Why we need resource server? Why we need to understand that okay, this is to protect the resource, but how it will protect it? Will be another server. Let's think, give a idea of what you guys think. Okay, how it should be, right? I know that nothing is clear, but let's just you are a developer, right? You know how to implement something. When we say something, something comes into your mind, right? You are imagining something, right? Let's walk through what is your imagination. Okay, Snehal, बताओ. What should be the resource server? Yes, that is fine, but how it will protect? So everyone can go to that. What is the protection it will do? Yes, generic. No, not grant type. Leave it the grant type. Grant type भूल जाओ. But how it will protect actually? मतलब I got your point. So okay, let me frame your answer in a very good point. Resource server. Let's forget about the resource server. I have a customer web service or account web service, right? It hold all the account and it is giving me all the crude operation. It's like that you can add a account, you can get the account, you can update the account, you can delete one account. Okay, all the crude operation via this that service. Now you need to configure resource server. What you will do, you will create a new service to protect this resource, or you will do something inside that account service so that it can work as a resource server. Okay, the answer is second point. First point you can do, but second point is the answer. What do you mean? That you have your resource in a microservice, and above that microservice you will write some code or you will configure something so that it can, before giving the access to that account, right, it should have a procedure to check that if you are a valid token or if your token is valid or not. And token, who is giving the token? Authorization. Auth server is giving you the token. So what I am trying to say, assume that same scenario, you have account service which is hosting the post endpoint or the all the put, get and delete endpoint, right? But before reaching to that, you are asking the client, okay, I'll allow you to get the account, but you need a valid token. Okay, yes. So what resource server will do? It will take the token, then what it doesn't have the capability to check the token is what is inside the token. It doesn't have, right? It have? No, it will not have. So it will reach to the auth server to check that if it is token is valid or not. If it is giving me it's an active token and I am able to understand that there is no exception with this token, then it will allow you. Okay? Yes. So let's implement that same resource server using Spring Security. So Spring is giving you something out of the box, the same functionality you can
you can give, right, using the Spring Security, Spring auth to jar. So let's create a project. We will just instead of resource, we will host a endpoint, right, something hello endpoint, anything, and we'll try to protect that resource, right, using the token. Okay, let's see. So I think I can let's go to the new module, right. Then you can work now, start dot spring dot. एक minute. I'll not use SDK. It is my 1.8% is fine. Okay. So my idea is open Spring Security or resource server. Okay. SS one. ठीक है. Next हम क्या क्या use करेंगे? Just take a look whatever I am using. I am only using the Spring Web. Okay. And I can use what are the other things I can take. But that Spring Security Auth 2, I'll take it outside. Okay, I can use a Lombok if it is required later, but okay, that's all. Okay, auth server. Okay, let's see what we are going to do. So in the pom.xml, right, I added one package for auth server. We can use the same package, right, for resource server. So this is the package we added for auth server. Same package is right there. It is having all the auth 2.0 functionality. Sorry, I'll add this dependency. Let me give you notepad. Okay, ठीक है. अभी क्या करना है? अभी करना कुछ नहीं है. इसमें हम एक कंट्रोल, पहले तो इसको इसका जो जेनरिक फ्लो है उसको पहले सेटिस्फाई करते हैं. दैट इज आई नीड ए कंट्रोलर, हेलो कंट्रोलर, राइट. पहले ये रिसोर्स वाला बनाता है, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं. I'll just paste it here. You can I can also type it, but you know, ठीक है. Hello from resource server. ठीक है. अच्छा, इसमें करना क्या है? गुड पॉइंट. व्हाट यू नीड टू डू. हमको कुछ बहुत कुछ करना है. क्या करना है एक्चुअली? हाउ आई कैन प्रोटेक्ट इट, right? I'll do just a few one line of code. I just write enable resource server. Okay,
and I need to give the resource server what is the URI where I can check my token, means what is your auth server URI. What is my auth server URI? Can anyone tell me? auth सर्वर कौन सा यूआरआई में जाके वो चेक कर सकता है कि ये वैलिड टोकन है कि नहीं? एग्जैक्टली सो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डॉट सॉरी ऑथ टू डॉट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा रिसोर्स राइट डॉट टोकन टोकन इसका नाम है टोकन इन्फो यूआरआई is equal to what I need to give http localhost what is my auth server 3004 right and auth dot check token yes or no इससे ये एक्सेस देगा नहीं देगा ना आपको प्रॉपर यूजर नेम पासवर्ड के साथ जाना है राइट नहीं तो कैसे एक्सेस देगा वी ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योर करके रखा है कि जो रिसोर्स और एंड सीक्रेट के साथ जो आएगा उसको ही एक्सेस देना राइट क्लाइंट आईडी रिसोर्स and I need to give okay and I need to give a server dot port 8 ठीक है लेट्स सी आई एम ये थोड़ा मेरे को ये लग रहा है ये जो क्रॉस साइन दिख रहा है मतलब इट इज़ बीइंग डेप्रिकेटेड मेरे को देखना पड़ेगा कि स्प्रिंग का कभी कभी क्या होता है लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे तो ये कभी कभी काम नहीं करता है बट लेट्स सी इफ इट इज़ वर्क और नॉट बट eventually you got the idea right how to what to do okay perfect okay you need this configuration अरे बोलो यार मैं भूल जाता हूँ नहीं तो कैसे करोगे Sorry. And enable resource server right when everyone is done let me know this controller you need I'll also give this controller to everyone if it is not handy right so we can use it okay let me know guys when you are done
Okay. Okay, let me run it at least. Who is doing it is just complete. First, let me take a look that if it is working or not. अभी ये कैसे काम करेगा? So basically, what is our fundamental idea कि हम पहले auth सर्वर से auth टोकन लेंगे और उसके बाद रिसोर्स सर्वर से हम उसी टोकन यूज करके रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, राइट? दैट इज आवर इवेंचुअल आइडिया, राइट? यस और नो? ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट्स, let it first run. नहीं, इम्प्लिसिट क्यों है? वहाँ पे सब कुछ है। ऐप वन इज योर पासवर्ड, ऐप टू इज कोई भी यूज करो, मतलब इम्प्लिसिट भी चलेगा। एग्जैक्टली, बेस्ड ऑन द क्लाइंट आईडी it is getting, we can use anything. आप implicit वाला authorization को, but I need a token and it this resource, right? मैं दिखाता हूँ, I'll just go with what now what next. So when everyone is ready, let me know, I'll just show. Okay, मैं मेरे को एक राउंड करने दो, नहीं तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. I'll first go with the auth token. ठीक है, ऑथ टोकन में मेरा इधर क्या है? इम्प्लिसिट वाला है क्या? नहीं, कोड वाला है। कोड वाला हम नहीं करेंगे, पासवर्ड वाला देखते हैं। कोड वाला भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग यू कैन डू, राइट? यू जस्ट नीड ए वैलिड टोकन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट बॉडी। सारे कोड वाला है। अच्छा, कोड वाला ही करते हैं, कोड वाला ज़्यादा है। तो आई नीड ए वैलिड कोड विच इज़ फाइन. I need to open an incognito window, then I need to give it here यार, क्या कर रहा हूँ मैं? Sorry, I need to give the URL. This is the thing, right? 364. Okay, I need to approve it. Why it is not asking the username password? Because it cached. That's what we need to close incognito. फिर से incognito चालू करते हैं. Right, it is asking me the username password. I can use this 1 2 3 4 5 sign in. I got a authorize, I got the code, right? I'll use that code here to get a token. ठीक है, अभी टोकन को कॉपी करके रख देते हैं. मेरे को एक्सेस टोकन मिल गया है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? okay, what next I need to do? What is my main purpose? To get that hello controller, right? To reach to the hello controller. So what, ये सब ऑथ वॉथ वाला सब ठीक है, बट हमको उस सब से कुछ मतलब नहीं है. रिसोर्स सर्वर के इनसे सोचेंगे तो आई जस्ट नीड ए यू नो माई, इट इज़ द, कहाँ पे होस्ट हो रहा है? 8 में होस्ट हो रहा है. किधर सर्वर डॉट पोर्ट यूज़ किया? 8. ओके, 3008. ओके, देन API v1 dot hello, right? And it should be a get request, nothing else. Authorize है no auth. ठीक है, बॉडी में तो कुछ आई डोंट नो, हमको कुछ चाहिए नहीं. हेडर्स में भी कुछ नहीं है. ओके, now let's see what it is it protecting? It should protect, right? I am not using any token. अभी मैं इसको एंड पॉइंट को हिट करूँ तो मेरे को क्या वो एक्सेस देगा? क्या बोलेगा? अनऑथराइज्ड. फुल ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स. पूरा ऑथेंटिकेशन चाहिए. ठीक है, so how to get it authentication, how to pass the token actually? Very simple. कैसे? हेडर में you need to use the authorization header,
एंड वो आपको बोल दिया कि किस टाइप ऑफ यूज़ करना है। उसने बोला था ना ऑथराइजेशन टाइप बीआरआर स्पेस। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ठीक से देखो, हेडर में ऑथराइजेशन में ऐड कर रहा हूँ कि जब टोकन टाइप देते हैं, टोकन टाइप इज द बीआरआर टोकन, you need to make sure that you are using a BRR token and you are giving the token here. Now let's see what it is able to give me the access or not. Okay, क्या बोल रहा है, invalid access token. Yes, what I was pretending, this is the thing, it is not able to reach to the server. ठीक है, कोई नहीं, करूँगा तो श्योर इसको। I'll change a Spring Boot version. Okay. I'll use clean install, clean the project. In the meantime, just to complete the coding, I'll show you. Hmm. Now let me rerun this and let's see if it is working. क्या बोल रहे हैं, सॉरी टेस्ट पैकेज को उड़ा देता है बेसिकली, उड़ा देता है इसको।
Okay, let me take a look if I am able to access the same thing or not. नहीं चल रहा है. What it is saying, invalid token. Just a minute, it is correct, right? Localhost 3004 worth shift token worth to client ID resource. Show your CE and client secret. अच्छा, नोट करके रखा था ये सारे कॉन्फ़िगरेशन. रिसोर्स टोकन just a minute. Why it is not working? Why it is not working? Is there anything mistake I am doing? Same local check token. This is the client ID. This is the client secret. Okay. Is it able to access? इनवैलिड टोकन. टोकन क्या ये हो गया क्या? नया टोकन एक बार इसको करके देखते हैं. जस्ट अ मिनट. Let me get a new token. अरे रिफ्रेश टोकन मिले. First one. Yes. ठीक है. Able to understand? बोलो. Hello, am I audible? ठीक है. Give it a try. Only you need to make sure that ये क्यों स्प्रिंग का नया वर्जन में कुछ तो इसका इशू है. I don't know. I need to take a look what is the issue. But ये पुराना वर्जन में ये चलता है 1.4.4 रिलीज. ये वर्जन यूज करोगे so it will work. Sorry, if you need this pom.xml, I will just copy the whole pom.xml. You need to just change your name, project name, and this thing. Rest all will be, you can copy from here. Okay.
Now रिसोर्स सर्वर का जो हेडर है, रिसोर्स सर्वर का हेडर, हाँ उसमें सिर्फ ऑथराइजेशन चाहिए। जो भी तुम ऑथराइजेशन और BRR ये टोकन दे दो, सो यू विल, इट विल यूज दैट टोकन एंड इट विल यू नो वर्क इवेंचुअली। ठीक है। सो ओके, ये करने के बाद आई विल एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स, देन वी विल प्रोबेबली close this. Let me know whenever you are done. Okay. अभी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, I'll just answer those question and I also try to frame those question also. Okay. बट ये बहुत ही सिंपल है राइट, इसमें कुछ नहीं करना पड़े। इनेबल रिसोर्स सर्वर, कंट्रोलर को एक्सेस करना है, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में ये सब चीज़ देना है, सिक्योरिटी ऑथ रिसोर्स टोकन यू इन्फो URI, security auth to client ID resource and client ID secret. This is my server.port, right? So if you use this, if you use this, then you are able to you know validate the token. Actually, how it is working? Resource server initially taking the token from the bearer using some filter, right? Everyone is using filter. जैसे हमने दूसरे जगह पे यूज़ किया था, वो फिल्टर से वो लेने के बाद इट विल कॉल दैट token info URI. If it is giving the correct response like active, pass नहीं हुआ, expand नहीं हुआ, तो ये दे देगा। Okay. Probably after some time if I try, it will give me the error. अगर 15 मिनट्स हो गया तो वो मेरे को एरर देगा कि अभी इनवैलिड है। ओके। Let me know whenever you are done. बोलो समरेश। एग्जैक्टली वी डिस्कस दैट थिंग यस्टरडे। देखो, हर एक टोकन का एक आपको एक्सपायरी टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योर नहीं है। यू कैन मेक इट अनलिमिटेड, राइट? इट इज़ आई थिंक, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो उसका सर टाइम है 12 घंटा, एक टोकन का एक्सपायरी टाइम है 12 घंटा। बट 12 घंटा एक एक्सपायरी टोकन के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इफ़ यू कंसल्ट विथ एनी सिक्योरिटी एडवाइजर, दे विल से दैट मेक इट सिंपल, क्योंकि एक बार अगर आपका कोई भी टोकन कंप्रोमाइज हो गया तो 12 घंटा तक आपका सिस्टम इज इन ए वर्नरेबल मोड। ओके। अगर एक टोकन कंप्रोमाइज हो गया एंड इफ यू नो दैट इफ इट इज फॉर 15 मिनट्स, सो द रिस्क ऑफ compromise system will be less, right? First, let's stick to that point. Then the your question is okay, so 15 मिनट बाद क्या मैं बार बार लॉग आउट करूँ? दैट्स व्हाट यू नीड हैव अ रिफ्रेश टोकन, राइट? हर 15 मिनट से पहले जब यू लॉग इन करेगा, राइट, आई एम यूजिंग वन सिस्टम, आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग इट, बैकएंड में आपको रिफ्रेश टोकन इशू करते 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 पूरा सिस्टम को ऑन रखना है। सो हर एक 15 मिनट के बाद या हर एक कॉल में यू कैन डू वट एवर यू नीडेड, राइट? हर एक कॉल में आप एक रिफ्रेश टोकन इशू करो, सो दैट नेवर इट विल एक्चुअली, जब भी आपका एक्सपायर हो गया आप एक रिफ्रेश टोकन यूज करो, बट यू नीड ए वैलिड टोकन, राइट? एक टोकन से आप पूरा थ्रू आउट द सेशन मत चलाओ, देन इट इज अ compromising थिंग। you rotate the token, you issue a new token, use that token, and token का चीज़ 15 मिनट या मतलब for the security advice standard is 15 minutes. So if you
if you certify your application with the PCI DSS or any card scheme, right, they will not approve your system until your token time is 15 to 30 minutes. अगर उससे ज़्यादा कर देते हो, they will बोलेंगे नहीं, इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि एक टोकन कंप्रोमाइज होगा तो that will be very risky. ठीक है, and whatever your concern, that can be handled by using the refresh token. रिसोर्स सर्वर को कुछ नहीं चाहिए. रिसोर्स सर्वर को क्या चाहिए बताओ? व्हाट इट नीड्स? एक टोकन चाहिए. अब ये टोकन क्या है, कब है, पुराना है, नया है, हाउ डू वर्क? एंड रिसोर्स सर्वर क्या करेगा? वो टोकन लेके ऑथराइजेशन सर्वर के पास जाएगा, ये एंड पॉइंट को कॉल करेगा और बोलेगा कि ये चेक टोकन वैलिड है कि नहीं बताओ. अगर वैलिड है तो मैं इसको रिसोर्स दूंगा. ठीक है. सो द पॉइंट इज यू आर नॉट, रिसोर्स सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही छोटा है. रिसोर्स सर्वर विल चेक द टोकन, इफ इट इज एक्सपायर मैं उसको एक्सेस नहीं दूंगा. अभी क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक नया एक्सेस टोकन इशू करके फिर रिसोर्स सर्वर को दे. रिसोर्स सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं जाके फिर से ये करूं, वो क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जैक्टली, क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ देर, मैं वही बोला ना, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 15 मिनट में आपका हो जाता है. ठीक है, आप कंटिन्यूअस काम करोगे तो अलग चीज़ है, बट 15 मिनट के बाद हो जाता है. या कुछ चीज़ है कि हार्ड स्टॉप होता है कि आपको लॉग ऑफ करके लॉग इन फिर से करना ही है. ओके, गुड टू गो. अभी एवरीवन इज ओके राइट? इज इट वर्किंग? पहले एक बात बताओ, काम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ग्रेट, तालिया. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में है, कैन एनीवन आंसर मी? ये टोकन रहता किधर है? कौन रखता है इस टोकन को? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ लो ये टोकन को मैं इशू करूँ तो ये तो अभी शायद 15 मिनट हो गया है, तो एरर देगा. तो एक नया टोकन मैं इशू करता हूँ. ओके, ये मेरे को नया टोकन मिला है. ठीक है, अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. यस, आई कैन यूज़ इट इन द हेडर्स. ओके, आई कैन सेंड इट. इट इज़ गिविंग मी द करेक्ट ऑथ सर्वर. एंड बीच से समझ लो मेरा ऑथ सर्वर डाउन हो गया. ऑथ सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ा. मतलब क्या? मतलब ये मेरा ऑथ सर्वर है. ठीक है, इसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया. अभी क्या होगा? वो टोकन से काम चलेगा? यस, नो, पता नहीं क्या? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि token is being stored in the instance or in memory of that auth server. auth server एक बार रिस्टार्ट हो गया, उसका सारे टोकन चला गया, कोई टोकन है नहीं उसके पास. राइट, एग्री? क्योंकि ऑथ सर्वर में हमने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया जहां पे हम टोकन को कहीं पे सेव करके रख रहे हैं. यस. ओके, now the next thing is that can we save it? Yes, we can save it. क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं सेव. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, I'll just not complete it.
I'll just give you hints. You guys can explore, right? कुछ नहीं. यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर, यूज़र डिटेल सर्विस जो भी हम दिए ना, इसमें दूसरा एक ऑप्शन होता है टोकन स्टोर. ठीक है, कहाँ पे टोकन स्टोर देना है? If you have a token store, that can be a table, right? So this is a JDBC token store. You can give some new JDBC token store. JDBC token store को क्या चाहिए? एक डेटा सोर्स चाहिए. तो आप एक टेबल बनाओ, उस टेबल को H2 में एक टेबल बनाओ और उसका करस्पॉन्डिंग डेटा सोर्स एक ऑब्जेक्ट जैसे हम पुराना प्रोजेक्ट में किए थे, राइट? एंड यूज दैट इन हियर डेटा सोर्स, राइट? तो ऑथ सर्वर क्या करेगा? हर एक टोकन को एवरी टोकन को वो क्या करेगा? टोकन स्टोर में उसमें स्टोर करके रखेगा. सो एवरी टाइम इफ ऑथ सर्वर गोज डाउन, नो इशू, everything will be fine. Okay, and one more thing, do resource server need to always go to the API call that will increase your network call also, right? Every time हर एक रिसोर्स सर्वर और सर्वर के पास आके API चेक कर रहे हैं कि ये सही चल रहा है, कि ये सही है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं, बताओ, राइट? कैन वी डू समथिंग दैट ये जो डेटाबेस का एक्सेस मैं ऑथ सर्वर को भी, रिसोर्स सर्वर को भी दे देता हूँ कि भाई टोकन उधर स्टोर है, तुम उधर से उठा लो. कैन वी डू दिस? यस, वी कैन डू दिस. हमको थोड़ा और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा जहाँ पे हम सो रिसोर्स सर्वर, वहाँ पे हमने सिर्फ इनेबल रिसोर्स सर्वर चला लिया था. बट व्हाट वी कैन डू, we can implement something where the JDBC token store, we can use the same token store. Okay, as of now we can't do it क्योंकि हमको अलग अलग H2 instance will work in the अलग अलग application, right? It is not a centralized data store. We don't have. If we have a MySQL or anywhere else which is running and both application is connecting to that data source, then I think that is possible. Okay, so token we can store in backend, not on the instance, and yes, that should be the ideal way. Okay, ठीक है. ये लॉजिकल लगा लास्ट में जो बोला मैंने? इफ यू थिंक इट इज लॉजिकल, इट शुड बी स्टोर इन बैकएंड समवेयर. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम ये टोकन स्टोर को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो 2 to 3 टॉपिक्स आर रिमेनिंग. एल्स the thing is like the token store को हम implement करेंगे for your own purpose, or you guys, if you get time, please do it, right? It's very easy. You know already, you know something, but you don't know how to, you haven't done it, but you can do it, right? You know all the points, only the things, right? You need to know that what are the table structure. You will get it from the anywhere. Google, go to google.com, you will, lots of things are there. स्प्रिंग के भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देख के ठीक कर सकते, टोकन के लिए क्या टेबल हमको चाहिए, राइट? ओके, दैट यू कैन डू इट. एंड एल्स टुमारो आई विल ट्राई टू कवर इट अप. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग? वन इज द क्लाइंट, जो हमने क्लाइंट बोला था, क्लाइंट को कैसे हम देखेंगे. और तीसरा जो चीज़ है कि ये टोकन को हम JWT से रिप्लेस करेंगे, सो दैट you will get the idea कि पूरा चीज कैसे चलता है. Okay, for the correctness I delete this thing. You guys just try it, right? That can be your exercise, right? So just give it a try if anyone is able to understand or anything, but नहीं तो हम कल स्टार्ट करेंगे उसको. ठीक है, अभी मैं इसको कमिट कर देता हूँ. So you will get everything. And sorry, I'll upload the YouTube for 2 days and yesterday session, so you'll get everything. Okay, any question? मजा आया? ये अभी तक नहीं है. थोड़ा माइक्रो सर्विस लेवल पे चीज समझ में आ रहा है, हाउ द माइक्रो सर्विस वर्क, कि मैं, मेरा ऑथ सर्वर एक जगह पे है,
यहाँ पे मेरा रिसोर्स, हर एक माइक्रो सर्विस विल बी अ रिसोर्स सर्वर, राइट, एंड दैट रिसोर्स सर्वर हैव द कैपेबिलिटी, देन मेरे को भाई टोकन चाहिए। टोकन छोड़ के मैं कुछ नहीं जानता हूँ, किसी को मैं नहीं पहचानता हूँ, मेरे को टोकन दो, ठीक है, मैं सब कुछ दे देता हूँ। अगर टोकन नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं दूंगा। ईच एंड एवरी माइक्रो सर्विस कैन बी ए रिसोर्स सर्वर, राइट, एंड क्लाइंट जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अभी क्या करना है, अभी आपको अगर किसी ने बोला कि माइक्रो सर्विस सिक्योरिटी क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, you will just tell in the design team who is designing everything, okay, I'll have a auth server and every microservice should be a resource server. This is the configuration you need to do. This is the basic configuration. You can just give a sample project and say that, देखो भाई मेरा ये रिसोर्स सर्वर है, यहाँ पे हेलो कंट्रोल है, हेलो कंट्रोल के जगह आप अपना फंक्शनलिटी लिखते जाओ, ठीक है, एल्स यू नीड टू, आपको और कुछ करना नहीं है, इसी में चलता रहेगा, ठीक है। अभी आप बनाओ, जितना रिसोर्स सर्वर बनाना है बनाओ, योर पूरा सिस्टम इज सिक्योर नाउ, राइट। नो रिसोर्स सर्वर आपको हर किसी को जाने के लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, एक टोकन सब जगह चलेगा, ओके। किशन, ठीक है ना, लेट मी स्टॉप।